Welcome to the another episode of Ricky's Edutainment. Today we have our guest Tanishka, one of our student from Visa Education and Consultant, and her journey is amazing. I remember when she approached me, just passing out from the 12th grade, and the emotional, story. It's more of uh, father, mother, and the daughter's, attachment. And then they want her to be in Canada since some of her relatives are staying in Canada, and she want to pursue her bachelor's in Canada. Unfortunately, that didn't click because of some crisis, maybe of financial problems earlier, but she never gave it up. The best deal, what I really like about her after completion of her graduation, indeed, in the last year, she approached me again and she ensured that she'll complete her IELTS and then she'll move to Canada. So here we have today, Tanishka. Welcome to the show. Thanks for Thank you. sparing time for us. So let's start with, and of course, our, agenda for the podcast, as Yeah. we need to spread awareness in the society, especially the one who wanted to migrate to Canada and the United States. So let's start with your experience, your journey. Uh, when did the first time it came in your mind that you wanted to pursue your education from Canada? Go ahead. I remember when I was in the seventh grade, I was at the airport and I was sending some relatives off for their US trip. And that's Okay. when I clicked. I was like, I always wanted to go through the door. And I'm like, I want to understand what it is actually living abroad, studying abroad. And so I always had this in my mind that I want to study abroad. Not that I had any selfish reasons, but the only thing that I remember was that I want to study in a background, like in a place where they have different cultures, like people coming from different cultures. So I was always fond of that. So that is Fantastic. when it first clicked me that I have to go and Very study nice. there. Very nice. And what course you completed before moving to Canada? What was the course? So before moving to Canada, I did my bachelor's from the University of Mumbai in banking and insurance. So it was like a 3-year course. Okay. And what course have you chosen, and which college, and why that college and the course? Okay. So I got selected into Fanshawe College at first, if you remember, because you were Yeah, the one who were correct, doing all my applications. correct. So I got into Fanshawe first when I came after my 12th grade, but unfortunately I didn't go. So then after my bachelor's, when I came to you again in the year 2021, I guess, that time we were doing our applications and I got a lot of applications from Humber College, from Centennial College, from Conestoga, and I would like to mention this here really, like I want to truly mention this, and I'm really grateful because of being a part of visa education. One reason being the application process was so good. I went through nothing was hidden from me. And I was in the loop the entire time, not only me, but also my parents. Getting back to the question, I'm so sorry, I got a little diverted, but getting back to Good. the question, I did my course here at Centennial College and I did my post graduation in global business management. And it was a 2-year course. 2 years course. Okay. So global Yes. business management. Could you tell me the Yes. curriculum, the modules which you have been exposed to? So we had this something called as logistics and supply chain. That was just a part of it, though you can also opt for a different course, like you can only study that particularly. But Mm. we had this, and one thing that I liked about Centennial College is that they gave us the CIFA certification that is attached, that is related to logistics. And apart from that, we also studied corporate sustainability and responsibility. That was a subject that really attracted me because they made us do things that was for the non-profit thing. So it added to our resumes later on, and it's actually helping a lot of people to gain jobs into fields like environmental planning. Apart from that, we also had organizational behavior that helps people get into HR and
we had everything related to business. Accounting was there, finance was there, insurance was there. Accounting Fantastic. and insurance I'm mentioning here because I did my banking and insurance. I did my bachelor's in banking and insurance. That's why it was a little easier for me when I got here, so I could resonate with the topics that I had studied earlier. So Okay. it was all related to business. So any person who pursues global business management, that person can either open their own business, work as a business analyst, and do anything and everything in the field of business. Fantastic. So that is something I would like to mention here. Correct. So your course was for 2 years, and that's Yes, known as post-graduation diploma in global business, is it? that's correct. Okay. So I just wanted to know one thing, since you're there in Canada, what is the difference between masters, say somebody is doing a master's program, and a post-graduation 2 years? What is the difference actually, if you know? So the difference that I have seen is that masters are usually done into universities. Okay. And what I studied was post-graduation diploma. That is not to master's level, and it does have a little difference in it because what we study is a little bit on the lower level, and what master's people study is like it's more in depth. I'm sure that is why it's called masters and not PGDM. But universities universities usually take master programs, and colleges, not all colleges take master's program. That's the only Yes. difference I know. I'm sorry, I don't have an in-depth knowledge about this here. Correct, correct. Yeah, Yeah. that's true. I mean, most of the colleges they cater post-graduation programs, not the Yes. masters. There are few, although. Yes. Perfect. Now, another thing I wanted to ask you, let's talk about the way you have studied in Canada at Centennial Okay. College. Since you Okay. studied here in SM Shetty, Mm-hmm. maybe, and from Mumbai University curriculum, and then going there in Centennial College and getting exposed to those modules. How Yes. difficult did you find at the initial stage? Because the program was for 2 years. Yeah. So, how it started your first semester? It was a semester wise, if I'm not wrong, correct? Yes, it Yeah. was. So were there any help you getting it from the professors and from your colleagues there in Centennial College? Were you so in India? What happened is the general trend is like, you go to the college, you get those notes, you might as well join some tutorials, and you appear for the examination. Yeah. There is nothing as such called as a dissertation or the project work, if I'm not wrong. So, Yes. what about Centennial College? Can you just put a light on it, please? Yeah. So Centennial And College sorry, is and sorry, I'm sorry to interject. I no would also problem. want you to have some conversation, for our local audience, maybe in Hindi and Marathi. Uh, Okay. Again, for Mumbai, it's better that you speak in Hindi and Marathi both, so that All there right. are No, some because I parents. thought, yeah, Yeah. because I thought this is only supposed to be in English. I don't mind in like all No, the no. languages. I mean, I think the only the agenda here is to ensure that the parents are watching it. That's the most Yeah, okay, I important get thing. it. The student they may have their wish, but the parents is the one who are the decision maker. So I Yes. would I would want to make it easier for those parents who are from our community, who the one who Mhm. speaks Marathi and Hindi or Punjabi or Gujarati. So we Yeah. can have those conversations. Please go ahead now. Yeah. Okay. So Centennial College has actually given me a lot of opportunities, to be honest, because once I came here, it was a complete different shift for me. Because as you mentioned that like in India, हमें ऐसे होता है ना कि हमें हर एक चीज मतलब बुक से पढ़ो, ऐसे Correct. पढ़ो, हमें Correct. बस बुक में बताया जाता है क्या करना है Correct. क्या नहीं। Correct. यहाँ पे आने के बाद books though I've hardly used. I've hardly Correct. written anything, I feel. The Correct. only thing I've written is when you are given something to write on paper, or where Right. the professor's asking you to do something. Correct. So that is the only time I've written on paper. But uske alawa, when you use laptops and everything, because all your exams are on laptop, and the Hmm. biggest blessing here is you have everything MCQ based. Everything. Whatever they teach you is going to come MCQ based. There are hardly few professors Hmm. who trick you and they put essay type questions, but those essay type questions are hardly for like 5 marks, or like sometimes for 10 marks. That time you have to like, even then you don't have to write down everything. You have to just type and you Okay. have to post it. So we have this lockdown browser for all our subjects, wherein you're not allowed to change your tabs, close, or like shift your tabs from one tab to another, or you're not allowed to go use Google or Chat GPT or anything of that sort. You just have to
sit down in front of the professor. The invigilators are constantly roaming here and there. You're connected to the college Wi-Fi. Hmm. And the only thing, I guess this is, I don't know if this is only in Centennial, but yeah, वहाँ के colleges के Wi-Fi में you cannot use ChatGPT no matter what. Because the moment you try using it, it just shows an error. Okay. So that was one thing. And you cannot cheat in your exams. There are a lot of people who think that it's very easy to study since it's MCQ, but no, you have to be very thorough with your topic and you don't have to memorize anything. Hmm. You have to just understand. It's more on understanding and implementing rather Very than nice. memorizing and writing your exam. That was a very big thing here. Because one more thing, people डू दैट पार्ट टाइम और Hmm. वो पढ़ते भी है तो मतलब वो Hmm. काम भी करते हैं वो पढ़ते भी है Hmm. तो इस चक्कर में उनको भी टाइम नहीं मिलता कि हम पूरी किताब बैठ के पढ़े और हम वैसे लिखे तो इस चीज में ये और मेरे को लगता है बाकी के सारे भी कॉलेजेस इस चीज में बहुत अच्छे हैं दैट दे डोंट प्रेशराइज यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इतना परसेंट आना ही चाहिए यस द परसेंटेज इज देयर यू हैव टू एटलीस्ट गेन अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट रिस्पेक्टेबल परसेंट बट Hmm. apart from that, everything was sorted at Centennial College. The professors were amazing. Hmm. There was this time where I faced a little problem at my college, and the professor was trying to fail me by 1%. I don't know. The professor had a history of failing students. In the past, and that's what I got to know from my seniors. So Hmm. that's when I went up to my success advisor. So each department has their own success advisor. So Hmm. for me, I had my own success advisor. So I went up to her. I told her what my problems are. Hmm. I explained her everything, and then she just gave me a makeup assignment in place of the things that I've missed and because of what my professor was trying to fail me. Okay. Because here, अगर तुम एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो तुम्हें फिर से उतने ही पैसे भरने पड़ते हैं. For Hmm. example, if I fail in one subject, I have to pay $2,000. And Okay. for an international student, $2,000, if you convert like from CAD to INR, that's into lakhs. Yes. And not everybody can afford it, and I'm sure that nobody wants to dip down that low, especially when you're in a country where you're handling all your expenses on your Correct. own. Correct. Correct. So talking about Centennial College, my success advisor was really good. My professors were really supportive. We were given study rooms to study after our regular classes were done. Each professor, we used to book our professor timings on our website, and Okay. a day prior, for example, if I have a doubt in, say, I have a doubt in corporate sustainability, and I want to understand one concept in depth, then I'll go on my college website. I'll book a study room and I'll mail the professor saying that I have booked this study room from this time. Okay. Does this work with you? And then please accommodate along with me so that you Hmm. can make me understand all these concepts. So in that way, professors were really good. Kudos to Centennial College because it is amazing. It is really a very good college. It has 5 campuses all Hmm. over GTA. And I was in Progress Campus, which is in Scarborough, Ontario. Okay. And currently I'm based in Mississauga, but that's not related to what you have asked me again. Uh, Talking about what all subjects and how the professors helped us, they also, as I told you, that we were doing this subject called corporate sustainability. That time we had this professor, my professor's name was Miss Natalie Chinson. She was an amazing professor. Like she's one of the kind of a professor that I'll always remember for the rest of my life because she not only made us understand what she's trying to teach us, but she Hmm. also, with every class, she used to enhance our global knowledge. She used to come and she was like, okay, students, tell me, what are the highlights of your day today? Like, what are the highlights? What's happening around the world? Tell us what is happening. And there's another professor called Miss Debbie Mohammed. I don't know if this video ever reaches out to them, but again, I just would like to mention them because these are the professors who not only told us what they're trying to teach us, but they're also giving us insights of the world, like how you have to grow as an international student, how you have to take your own stand in a country where you have nobody but yourself. So Fantastic. amazing professors, amazing college, amazing facilities. Everything was done on time. I love the campus. The campus was very big, huge. The bus facilities, because since you're a student, you cannot you only travel through transit. So that is, we had an amazing bus terminal inside our college, and Hmm. from there, the traveling was really good. The transit was really good. So Centennial College, in short, I would just like to conclude by saying that it was a really great experience being a student at Centennial. Fabulous. Awesome. So now let's talk about your
accommodation, the way you were managing your day-to-day activities, because that's one of the major concerns for many parents back in India for their kids. Yes, So obviously we had our account which where we have deposited certain amount that's called a yes, GIC, while applying for the visa. So you had some amount there in your Canadian account. So when did yes, you move from here? So you took a flight from say Bombay to Toronto and then you moved to your destination. Where were you staying? yes. Were you staying in a college accommodation or outside? So talking about Centennial College also gives you accommodation, but you have to again book it in prior. But I did not choose that. I chose give like going into an accommodation, into a shared accommodation. And again, you helped me find out places on Hmm. Facebook. So that's how Right. I got into touch with. So here, everything is on Facebook Marketplace. If you want to find a place, the best thing is go on Facebook Marketplace, look for whatever rooms you want. If you're looking for a shared accommodation, look for shared. If you're looking for a private room, you have to look on private room, and you have everything. You have the person's contact number. You have whatever amount you're going to pay. So here, before I went, I'll talk about my journey. So I took the flight from Bombay. I had a layover at Istanbul, Hmm. and then from there I moved to Toronto. Toronto. Yeah. So once I came here, thankfully I had my relatives. But for people who don't have it, you can directly go to your accommodation and प्लान योर फ्लाइट ऑन अ डे कि तुम्हारा समझो 1 मई को तुम्हारा मूव इन है तो तुम्हारी फ्लाइट ऐसे टाइम पे होनी चाहिए कि तुम 1 मई से 1 दिन पहले पहुंच रहे हो बिकॉज 1 दिन पहले तो फिर भी अलाउ कर देते हैं बहुत सारे ओनर्स घर Owners. के कि Correct. ठीक है सिंस यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम 1 दिन पहले आपको मूव इन होने का परमिशन देते हैं Correct. अनलेस वहां पे पहले से कोई रह नहीं रहा और उनका मूव आउट डेट फर्स्ट ना हो क्योंकि यहाँ Correct. पे सब Correct. कुछ फर्स्ट पे शुरू होता है और मंथ के एंड पे खत्म होता है सो दैट Correct. इज हाउ द साइकिल गोज Correct. तो जब मैं आई थी तब आई लिव्ड इन अ शेयर्ड हाउस वेरी क्लोज टू माय कॉलेज आई हैड टू टेक वन बस दैट टुक मी 30-35 minutes बट इट वॉज फेयर इनफ थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो होता है कि कैसे हम ट्रैवल करेंगे कैसे नहीं बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम टाइम के साथ सब सही हो जाता है Hmm. मैं जब आई थी तो मैंने अपना इंडिया से ही मैंने मार्केट प्लेस पे घर देखना शुरू कर दिया था एक मैंने घर देखा आई ज्वाइन विद द पीपल ऑन डिस्कॉर्ड पीपल फ्रॉम माय कॉलेज Hmm. तो जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फॉर एग्जांपल अब मैंने अपना डिपॉजिट भर दिया है सेंटेनियल कॉलेज में Hmm. तो मैं क्या करूंगी मैं उसके फेसबुक पेज को फॉलो करूंगी Hmm. इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करूंगी जितने भी पेजेस सोशल मीडिया पे मैं उस पर फॉलो करूंगी और हर एक उस पे ना एक व्हाट्सएप लिंक होती है उस Okay. व्हाट्सएप लिंक पे यू हैव टू ज्वाइन तो जब हम वो ज्वाइन करते हैं ना हमें पता चलता है कि अच्छा मेरे साथ ये स्टूडेंट्स है यू ऑल्सो गेट टू नो दैट ओ सो मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सेम सिटी एज आई एम ट्रैवलिंग टू बिकॉज Hmm. वंस आई केम हियर मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग बॉम्बे से है मुझे आई Hmm. थॉट कि कनाडा यूजुअली नॉर्थ इंडियंस ही टारगेट करते हैं आना Punjab बट and नहीं Delhi. Yeah. या एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा Hmm. था कि बॉम्बे से कोई होगा नहीं होगा आई डोंट नो बट जब मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बॉम्बे तो आई spoke to a lot of people. I asked them, ki, what are your plans? Where are you going to stay? So we made a group of 8 people. We made a different group on Discord. We used to Hmm. talk every day. We used to shortlist all our house, our accommodations, and everything. And that's how I got in touch with 8 people from Centennial College who were studying into different backgrounds, like different Correct. fields, Hmm. not from global business management only. And we found a house here in Scarborough. We paid the rent before moving in. सो वी Hmm. पेड इट इनटू कैड तो वो आईएनआर टू कैड वो तो हमारा जीआईसी में जाने से पहले ही हमने पेमेंट फॉरेक्स से किया था So क्योंकि rent जो आप पे करते हो, rent you have to pay it in हाँ advance जी or हाँ जी तो deposit हमें also? मूव होने से पहले फर्स्ट और लास्ट मंथ देना पड़ता है Move एंड होने के देन पहले यू कैन first and last. लास्ट मंथ डिपेंड्स ऑन अगर वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है या हाँ. लीज है वो लीज पे डिपेंड करता है अगर 1 साल का लीज है तो तुम समझो जनवरी से स्टार्ट करो तो तुम जनवरी का पे करोगे दिसंबर का पे करोगे तो जब तुम मूव आउट करोगे तो तुम्हें नवंबर एंड को अपना दिसंबर का पे नहीं करना है बिकॉज एनीवे तुमने कर दिया है Hmm. पे Hmm. बस Hmm. तुम जब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वो 1 साल के टेन्योर में पहले ही निकलना है अगर मैं 6 महीने में मुझे कोई बेटर प्लेस मिल गई या मुझे किसी फ्रेंड के साथ मूव इन होना है मेरी चॉइसेस चेंज हो गई मुझे मेरे उस घर में इश्यूज हो गए तो दैट इज व्हेन मैं क्या करूंगी कि मैं मई में हट जाऊंगी बट मैं किसी और को अपनी जगह पे रखूंगी आई पुट अ रिप्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ मी तो वो पर्सन जो अपना फर्स्ट मंथ रेंट देगा तो ओनर वो रेंट मुझे भेज देगा
तो मेरा Okay. लास्ट मंथ मुझे वापस मिलेगा। More of an adjustment kind of. यस, मोर ऑफ एन एडजस्टमेंट है, करेक्ट। Okay. तो Very nice. वैसे इट गोस, तो मेरा अकोमोडेशन ऐसे हुआ था, आई लिव्ड इन दैट हाउस फॉर कंप्लीट, मतलब 1 साल मैं रही उसमें, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मई से स्टार्ट हुआ था और वो नेक्स्ट ईयर मई में खत्म हो गया था, तो 1 ईयर आई स्टेड इन दैट अकोमोडेशन। Hmm. एंड अगेन मार्केट प्लेस की जीजी, अगर आप लोग घर देखना चाहते हो, आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल द पीपल हु विल बी वॉचिंग दिस Hmm. that if you have any issues or anything, make sure that you go on marketplace, you talk to them. For all the parents out there, I know how it is because I am a very pampered child of my parents, so even they were very scared before sending me. Hmm. But keep transparency between your parents and yourself, and that is how you'll go through everything. Don't hide thinking कि oh I'm sitting so far, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे या उन्होंने मुझे क्या सोच के भेजा होगा, बिकॉज here you are alone। बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। जो पेरेंट्स का जो शेल होता है उसमें हम जब उससे बाहर निकलते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है जो Hmm. हमें Correct. वैसे डे टू डे बेसिस पे नहीं पता चलती, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट cocoon, you have to get out of it, you have to see what kind of, like, not everybody is as same as you, I would like to say this, because I have been through a lot in these past through 2 years, and it has Right. been a really good journey, Fantastic. but I learned Fan- it the hard way. Fantastic. Fantastic. And that's, I think, probably that could be, that's the, sometimes that could be the secret of your success. You never know. Yes, that's true, very true. So, okay. So what next now? Now, before I should ask you about your future plan, let me Mm-hmm. ask you, were you working part-time in Canada while studying? Yes. And So what kind of jobs were you doing? okay, I was working as a cashier and server at downtown, called Roja's Kitchen. I was working there for a good 8 months, Mm-hmm. and before that, I have done few jobs such as giving karate mats to like placing karate mats in indoor stadiums before a match. So यहाँ पे part time jobs is everything labor unless you don't get into a very good co-op that is into a corporate field or something like Mm. जॉब्स में सब लोग पार्ट टाइम जॉब्स में यही करते हैं, लेबर वर्क, बीट बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड, यू हैव टू टेक योर सिक्योरिटी लाइसेंस। एंड यहाँ पे लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एज अ कैशियर एंड सर्वर वर्क करना है किसी रेस्टोरेंट में, आई हैव टू हैव फूड हैंडलर सर्टिफिकेट। You have to pay $50 on that website. You have to learn about how to handle food. तो ये भी Yeah. एक बहुत अच्छी चीज है कि मुझे इस कंट्री की, दैट इज हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, बिकॉज Hmm. यहाँ पे किसी भी काम का कोई शर्म नहीं है। जैसे इंडिया में है ना कि ओ यू वर्क एट मैकडोनल्ड्स, तो हम थोड़ा उनको वैसे उस नजर से देखते कि Your मतलब parents won't even allow you, man. That is, या एग्जैक्टली, तो yeah, योर correct. फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स तो ऐसे बोलेंगे कि व्हाई डू यू हैव टू डू Correct, इतना correct. ऐसा जॉब। तो यहाँ इतना पे हम सारे तुमको जॉब्स पढ़ा ना रहे हैं, तुम सेम जाके है। मैकडोनल्ड में खाना बेच रहे हो, क्या या चलेगा? हाँ, करेक्ट, तो यहाँ करेक्ट। पे सारे जॉब सेम है, मतलब कोई अगर पिज्जा डिलीवर भी कर रहा है ना, तो वो अगर डिलीवरी कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी में डिलीवरी कर रहा है, ये करेक्ट, नहीं कि वो करेक्ट। किसी और की गाड़ी में डिलीवरी कर रहा है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग आई फील, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने मिलता है। प्लस हम अकेले होते हैं, हम अपने पैसे जोड़ भी रहे होते हैं हमारी फीस के लिए, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपने एक्सपेंसेस देख रहे होते हैं, हम एवरी मंथ हमारी ग्रोसरीज कर रहे होते हैं, सब कुछ। हम यू आर लिविंग योर लाइफ। जब हम बोलते हैं ना हम पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स बोलते हैं यू लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ, तब हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते, तब हम वो लाइफ जी रहे होते जो हमें दी गई है। यहाँ पे हम वो लाइफ जीते जो हम बनाते हैं अपने लिए खुद। तो यहाँ पे हमें हर चीज के लिए करना पड़ता है। तो मैंने 2 सर्टिफिकेट्स लिए हैं। एक है स्मार्ट सर्व, वेर इन अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व करना है, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव दैट सर्टिफिकेट। तो हम्म। वो सर्व करने के लिए भी यू आर नॉट एनीबडी कैन गो एंड सर्व अल्कोहल टू यू, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स देयर इन दैट ड्रिंक। तो तुम्हें वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सो आई हैव स्मार्ट सर्व, आई हैव फूड हैंडलर सर्टिफिकेट, एंड आई ऑल्सो हैव CIFA certification is again my education certificate, so I'm not counting that here. But I know friends who have security guard licenses, so वहाँ पे they properly teach you how to give CPR and everything. हम्म। तो उनका पूरा वो होता है। कुछ कुछ गार्ड्स है जो थर्ड लेवल गार्ड होते हैं, आई माइट बी रॉन्ग मतलब थर्ड लेवल बोलने में, बट एक लेवल के कोई गार्ड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो गिवन दिस स्टिक, दे आर ऑल्सो गिवन हैंडकफ्स की अगर कोई कहाँ पे मिल जाए या कुछ हो जाए। तो इट्स रियली गुड, क्योंकि तुम इंडिया में ये सब नहीं सोच सकते कि तुम सिक्योरिटी हम्म। गार्ड बनेंगे। हमारे इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड में तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, वॉचमैन। यहाँ पे वो It's नहीं है very तो good. And now, so let me, yeah, sorry to interject. Actually, no, that's ये ना, ये okay. mindset का problem है. ये, this is माइंडसेट का something really प्रॉब्लम है, good about करेक्ट। the Western countries, I feel, and this is my honest opinion. When हम्म। I was traveling, and then I've seen the people, I mean, here up.
इंडिया में कैसे आप किस तरीके से किसी को एक्नॉलेज करते हो? आपको लगता है यार वो कचरा फेंक रहा है, या फिर वो गाड़ी Yeah, चला रहा है, वो exactly. ड्राइवर है, या फिर वो सो वी ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट दैट इज अ Yeah, प्रॉब्लम इन अ कंट्री. we're always on the back foot की ठीक है, let करेक्ट. them do. यहाँ पे सारे काम को एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट है। अगर तुम करेक्ट. क्लीनर हो तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी एक सीईओ को मिल रही है। Correct, correct. That's really Yeah. good. That's really good. And I'm really happy to see you like this. And then the way you have been expressing yourself, because Yeah. I think there's a lot of evolution which has happened in you. That's I can make it out, Yeah. and I'm really proud on these Thank you. factors. Awesome, good job. So now let's talk about your your plan. As in, since you have completed recently, and you're also waiting for your temporary visa, temporary visa I'm kind of. No, I'm actually on my applied status for my work visa right now. There's no update from IRCC yet, Okay. but I have this PDF from their end that says that I can work under any employer, any organization with no work restriction. क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो हमें 20 hours per week था. Hmm. But now that I've completed my studies and now that I'm moving on to the next chapter of my life, तो work permit के लिए you can work unlimited hours और किसी भी employer, किसी भी organization पे. So I'm on my applied status till 27th July. Or 27th let's see July. what IRCC has to tell me. Okay. So, since you applied for your resident permit, my temporary permit rather, and they told you that you can certainly work for full times. Now, are you Yes. started applying for the jobs there in the corporates? Yes, I have. So Indeed, there's this Career Monster. No, this is Career Builder and Monster. These are the three sites where I've been applying a lot. Apart from that, LinkedIn भी एक है जिसपे मैं apply कर रही हूँ. But I would like to mention है कि कोविड के बाद कनाडा में जॉब्स की थोड़ी सी कमी हो गई है. Okay. एंड बहुत ज्यादा कंपटीशन है. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू पुट हियर. Hmm. क्योंकि जब हम ना यहाँ पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे इंडिया में होता है बैचलर जब हम कर रहे होते हैं एवरीबडी इज ऑफ आर एज. Hmm. जब हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं, मेरे क्लास में आई हैव सीन पीपल हु आर 36 years ओल्ड, Hmm. पीपल हु आर 28 years ओल्ड. तो हमसे बहुत बड़े लोगों के साथ भी हमने पढ़ाई की है. क्यों? क्योंकि एवरीबडी कम्स हियर पढ़ाई के थ्रू एंट्री लेने के लिए इस कंट्री में, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो Correct. वो एंट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कैसे होता है ना, वो अपने होम कंट्री में बहुत एक्सपीरियंस लेके आए जॉब Correct. की. तो Correct. वहां हम कहीं उनके सामने ना कंपैरिजन में थोड़े कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे Hmm. पास इतनी बैक होम हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि हम तुरंत बैचलर्स करके हम कनाडा आ जाते हैं. हम तुरंत मास्टर, कोई कोई लोग मास्टर्स करके भी चले जाते हैं, उनके पास Hmm. भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होते हैं. आई हैव क्लासमेट्स हु हैव हैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइक 10-15 years into field like sales, Okay. HR. और फिर वो लोग जब भी Mark. Yeah. मार्केट में जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको पहली प्रायोरिटी मिलती है, हमें Right. नहीं मिलती है. तो वहां पे कहीं ना कहीं वो हो जाता है. बट येस, देर आर जॉब्स फॉर new grads, there are jobs for people who have just recently graduated from their college. And your college, my like Centennial College, gives you this career fair. 2 days ago, I got their mail Hmm. saying that we have a career fair in college and you have to register for it. So fingers crossed, let's see what happens there. So the career fair, do you generally find the employers visiting to your campuses and recruiting from there? Yes, Yes. so the recruiting team comes. So there are multiple companies that come. So I have some companies that were mentioned in the mail. I remember it was RBC, CIBC, like all the banks that I'm Banks, mentioning yeah, right now. correct. Yes, so RBC is there, CIBC is there, TD Bank is there. So these three banks are coming. And apart from that, there's this company called IBM. IBM is in India also. That Mm. company is coming. Yeah, I guess. और भी बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, बट मुझे अब याद नहीं आ रहे. तो मैंने उस इवेंट के लिए भी रजिस्टर किया है. And Correct. I've also given out my resumes to people who have been here before me Mm. and to all the networks here, because here everything works on network. You cannot be in your attitude saying मैं अपने उस पे कर लूंगी या कर Mm. लूंगा. तुम्हें Mm. थोड़ा सा सबके साथ मिक्स होना पड़ता है. Correct. अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा सबके साथ उठ बैठना पड़ता है. तुम्हें समझना पड़ता है कौन कैसे क्या सोचता है, Mm. तुम्हें किससे कितना. यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फिश टू बी ऑनेस्ट. तो Correct. 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 या. Correct. So, another thing I wanted to ask you is in like अभी कनाडा में जा रहे हैं, मिसिसागा में हो, आप टोरंटो में हो, and then downtown, these places. यस. How is the surrounding like? Is it you feel that you are in India itself, or
You have some, different people from a different nationality and the culture. So, Mhm. what was your feeling about it? So initially, when I came here, I used to see a lot of people from different backgrounds. But there's this specifically, if you go to Brampton, you only see Indians there. Like there's very Okay. less chances of you seeing people from other places. But apart from Brampton, there are places जहाँ पे अभी भी गोरे दिखते हैं. मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं गोरे दिखते. But अगर दिखते तुम हैं और अपने कंट्री हाँ में, गोरे दिख मतलब नहीं रहे हैं. It's हाँ like a मतलब थोड़े Punjabi dominations, that way. I mean, I don't mind. चलेगा. Everybody's here on their Right. own. We should be But proud on this, no? That these our Indians are dominating Canada any which ways. मतलब Kind कहीं of. ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि हम फिर इंडिया में ही आ गए, मिनी इंडिया में आ गए. Right, एक right, तो right. अच्छा भी क्योंकि काफी इंडियन रेस्टोरेंट्स है तो होम सिक फील नहीं होता. अगर कभी Okay. मन कर रहा है कि कुछ इंडियन खाना है तो है यहाँ पे. इंडियंस हैव ग्रोन अ लॉट हियर. आई फील लाइक बहुत ग्रोथ हो रही है इंडियंस की यहाँ पे. Hmm. आई एम नॉट आई नो वे आई वांट टू डिफेम इंडिया. आई स्टिल लव इंडिया एंड इफ गिवन मैं अभी भी वापस आना Right, चाहूंगी. बट right. यहाँ पे अगेन वही है, ब्रैम्पटन में थोड़े से इंडियन ज्यादा है. बाकी प्लेसेस पे आई वुडेंट कंप्लेन अबाउट द सेम थिंग. हाँ अगर तुम और आउटस्कर्ट्स पे जाते हो तो तुम्हें और लोग मतलब दिखने मिलते हैं. बट वही है, कल्चर यहाँ पे एक कल्चर शॉक तो मिलता है यहाँ आने के बाद. अगर भले Hmm. तुम्हारे आसपास इंडियंस है बट Hmm. कल्चर शॉक तो मिलता है. एंड द थिंग इज यहाँ पे इंडियंस ही इंडियंस को देखते नहीं है. तो अच्छा. मतलब अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो अगर इंडियन है वो तुम्हें ऐसे क्रॉस करके चले जाएगा. बट अगर कोई गोरा है तो तुम सामने से स्माइल दोगे उसको. Okay, ऐसा okay. है. Good, good, good. So, and apart from Toronto and nearby places, have you got a chance to go to places like Vancouver or some other parts of Canada? No, but like I've traveled a lot in Ontario, so there's this place that I'm really fond of, which is in here in London, Ontario, जो मेरा फैनशो कॉलेज में Hmm. वो 12th के बाद सिलेक्शन हुआ नहीं था. हुआ मैं था एडमिशन या नहीं हुआ था एडमिशन. करेक्ट हाँ करेक्ट या मतलब राइट. वो लंदन, आई मीन मैं जितना भी उसके बारे में बोलूँ इट्स अमेजिंग. मतलब वहाँ का मतलब इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम जीटीए. आई फील लाइक जीटीए बहुत क्राउडेड हो रहा है कि ओके. सब लोग ही जीटीए में आ रहे हैं. एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे जॉब्स भी कम हो रहे हैं. क्योंकि अगर हम आउटस्कर्ट्स पे जाए, जैसे हम बेरी के तरफ जाए, सो बेरी हम्म. इज एक जगह है यहाँ पे. अगर हम्म. हम वहां जाए तो वहां पे जॉब्स बहुत है क्योंकि हम्म. लोग सारे टोरंटो में आ रहे हैं. सबको ऐसे लग रहा है कि हम्म. टोरंटो मतलब हब बन गया है. जैसे हम्म. हम इंडिया में जैसे हब नहीं बन गए, दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर. करेक्ट करेक्ट. जैसे हाँ. यहाँ पे टोरंटो हब बन गया कि जो आए जहां से भी आए सारे टोरंटो आ रहे हैं. सारे टोरंटो आ रहे हैं सिर्फ पीआर लेने के लिए आउट ऑफ द उसमें जा रहे हैं. जैसे नोवा प्रोविंस. स्कॉटिया चले गए, हैलिफैक्स चले गए और फिर उसके बाद आ डायरेक्ट टोरंटो रहे. और फिर टोरंटो में इतनी लोग हो गए, इतना वो हो गया टोरंटो की. जब तुम टोरंटो से थोड़ा बाहर जाते हो ना तो मैं ऐसा लगता है अच्छा थोड़ी खुली खुली जगह भी है यहाँ पे. हम्म. Right, good. So now let's talk about the problems. In India, especially from last year हम्म. onwards, there were a lot of shocks because Canada being the major market for the Indian students, people like us who are into placing students abroad, Yeah. we have been facing the heat now. The relationship of a country, our government with the Canadian government, which Mhm. is not probably in a good shape. uh, so we Yes. also heard recently that there are a lot of housing crisis. People have been asked to, leave their jobs. And I also come across some people who left Canada permanently and who came Mhm. back to India. What did the situation look like at this point in time? I'm saying probably in the last year or so, these things were happening. But what is the situation at this point in time, according to you? Mhm. तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रूडो ने बहुत ज्यादा मास इमिग्रेशन करी हुई है. Hmm. तो मतलब इतने सारे लोग आ गए थे कि जो डिजर्विंग लोग थे उनको अभी वो रिवर्स इमिग्रेशन की तरफ जाने लगे. आई नो पीपल हु हैव स्टेड हियर फॉर 8 years, पुट इन देयर लाइक हार्ड एफर्ट्स, एवरीथिंग दैट दे हैड, सब कुछ डाल के वो यहाँ पे आए इन सर्च ऑफ व्हाट अ गुड लाइफस्टाइल, मे बी अ पीआर. बट उनको वो नहीं मिला बिकॉज ऑफ मास इमिग्रेशन. तो जब कोविड हिट हुआ द स्कोर्स वेंट डाउन, लाइक दे वेंट डाउन रियली बैड. मतलब 200 पॉइंट्स पे भी लोगों ने पीआर उठाई है. और Hmm. उस टाइम पे स्क्रूटनी नहीं हुई थी. आई फील पीआर की इतनी, मैं तो नहीं थी चलो कोविड के टाइम पे यहाँ पे. बट when I what I got to know is from people who have moved back to their home countries. सो कोविड के टाइम पे ऐसे ऐसे लोगों ने पीआर उठाए जिनको प्रॉपरली
इंग्लिश भी नहीं बात करने आती, तो अभी Hmm. उसके लिए दे हैव पुट इन दिस न्यू क्राइटेरिया आया है। मुझे भी मेरे वर्क परमिट से पहले मैंने आइल्स दी थी, मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे आइल्स स्कोर को एक्सपायर हुए, Hmm. बट मुझे सेल पे वापस देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब दे आर चेकिंग कि तुम कितने जेन्युइन हो पीआर या वर्क परमिट लेने के लिए। Correct. आर यू एक्चुअली एबल? क्योंकि इंडिया से क्या होता है, बहुत लोग जुगाड़ लगाते हैं, बैंड्स के लिए पैसे दे देते हैं, दे गिव, मतलब स्मॉल टाउन्स में ऐसे होता है ना कि बाहर जाना है, ओके यू पे अ सर्टेन अमाउंट एंड वी लेट यू गो। Hmm. तो आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, बट मैं बोल रही हूँ। Hmm. बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं। तो अभी वो लोग क्या करें, अभी वो लोग ने यही कंट्री में फिर से शुरू किया कि आप सेल्फ पिप दो, आप आइल्स दो, फिर से दो, टेल अस दैट यू आर एक्चुअली जेन्युइन, एंड फिर Hmm. हम आपको आपका वर्क परमिट देंगे, फिर हम आपको आपका पीआर देंगे। अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, दैट इज वन मेजर रीजन दैट दे आर गोइंग बैक। वन मेजर रीजन इज जॉब्स। अगेन आई एम मेंशनिंग जॉब्स, क्योंकि इस पॉइंट पे जिस तरीके से अभी चीजें चल रही है, रिलेशंस बिटवीन ट्रूडो Hmm. एंड ट्रम्प, वो Hmm. कह रहे हैं कि 11th ये बनाएंगे स्टेट Hmm. कनाडा को। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है जो होंगे, एंड नॉट एवरीबडी इज अग्रीइंग टू इट, बिकॉज जो कोर कनेडियंस है वो चाहते हैं कि दे वांट टू कीप कनाडा एज एन इंडिविजुअल कंट्री एट इट इज, एंड दे डोंट वांटेड टू मिक्स इट विद एज यूएस, क्योंकि अगर यूएस का आ गया तो फिर वही है, गन रूल्स आ जाएंगे, एवरीबडी, जितनी वायलेंस अभी है नहीं उससे और बढ़ जाएगी। तो Hmm. बहुत सारी चीजें हैं, एक वो रीजन है जिसके वजह से लोग इमिग्रेशन जा रहे हैं, और दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ। Hmm. ये टैरिफ्स वगैरह जो 25% जो बढ़ गए, एवरीथिंग हैज टैक्सेस ऑन इट, तो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया, दैट इज अनदर रीजन What व्हाई is what is इमिग्रेशन। uh what is your expenditure at this point in time? Like how much do you spend in a month, including your accommodation and your day-to-day expenditure, like your food and other stuffs? So for my accommodation, I pay $650 per month, and for my grocery every month लगा लो 250, तो 650 250 मतलब 1000 1500 $2000 कहीं नहीं गए महीने के, क्योंकि तुम्हें नॉट ओनली दैट, क्योंकि सिंस आई डोंट हैव माई ओन कार हियर, मुझे अपने ट्रांजिट के लिए वी हैव दिस कार्ड कॉल्ड प्रेस्टो कार्ड, तो वो हमें टैप करना होता है बसेस में, तो उसमें भी हमें फंड्स होने चाहिए। Hmm. फिर अगर आप बाहर कहीं जाते हो कुछ खाते पीते हो, तो वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए 1000 1500 पकड़ लो। यू हैव Hmm. टू गेट योर विंटर जैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे स्नो इतनी पड़ रही होती है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन टू गुड क्वालिटी ऑफ विंटर जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट, बट तुम्हें बार बार चेंज भी करना पड़ता है उसको। ये सारे एक्सपेंसेस मिला के $2000 तो पर मंथ इट इज देयर फॉर श्योर। लाख रुपए का खर्चा है मतलब हाँ, आराम से। नियर अबाउट है ना? हाँ जी। Okay, okay. And how many dollars do you earn per hour? I mean, what's the labor law says if somebody is working as a part-time So for part time, it is 16.50 per hour. per hour? And Okay. again, it depends, अगर आप सिन पे काम कर रहे हो तो वैसे आई वुड सजेस्ट पीपल कि सिन पे ही काम करो, क्योंकि अगर तुम कैश पे काम करते हो तो देर आर, तुम्हें बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज Manipulation kind of. यस, बिकॉज वो रिकॉर्ड्स में नहीं आता, एंड समटाइम्स देयर हैव बीन केसेस दैट आई हैव सीन कि लोग मैनिपुलेट भी करते हैं कि तुम तो कैश पे हो तो तुम्हें जितने मर्जी घंटे घंटे लगवा लो, मतलब 20 hours इज योर वर्क लिमिट एंड यू डोंट हैव इट ऑन योर रिकॉर्ड्स इफ यू आर ऑन कैश। तो कैश पे तो इट इज इन अ वे इलीगल, एंड बीइंग अ स्टूडेंट ये रिस्क तो मत ही लो कि तुम इलीगली काम कर रहे हो, जो भी है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, गो बाय द बुक्स, गो बाय द रूल्स। Okay, good. So I just also wanted to bring it to your notice that the things which had happened recently in between Canadian government and the Indian government, these all are politically influenced, the political reasons, any which ways. Yes. And apart from that, uh, I always had this feel, generally the Canada considered to be the gateway for the United States. Till date, I still feel there are people from our city Hmm. who had moved to Canada, and they told me, sir, the reason I'm moving to Canada, considering the kind of budget I would be investing on my education, on top of it, I'll get my PR, and then, of course, if you have a PR, you can stay Move to and the work in the States. United States because United Yes. States, being the larger country, would have better opportunities. Yes, correct. Talking about the gun culture and all, I mean, this is there,
these kind of problems are there not only in the US. I mean, there are Mhm. countries where people have been facing the similar issues. So, I which is agree. that is not quite new. Uh, Yeah. and again, the immigration which is supposed to happen to the other countries like the US or the Europe from Mhm. Canada, it has not been happening in large numbers. There was never being a cap which they put it on the students, the number of students which should Yes. be going to the Canada. So I guess these are the reasons why the problem occurred. But I think this is the temporary problem. We are expecting that probably Yes. from this intake, from this fall intake, or might as well January intake, things would get streamlined. Uh, is supposed to be the election happening in Canada in near times, No, or so as you're saying that this will improve, that has already started. वो already pipeline में क्योंकि students पे already cap लगा है, things have started getting better mm-hmm, and ये वाले intake से काफी better चीजें हो गई है. Like पहले जैसी थी like few months back उससे बहुत better हो गई है अब चीजें. okay, क्योंकि now the government knows कि the mistakes that have made in the past, hmm, I'm nobody to judge them because मुझे भी इतना कोई आइडिया है नहीं इस hmm, बारे में, बट hmm, अब चीजें बेटर हो रही है. तो 2026 के मिड तक या ये ईयर के मिड तक भी अगर चीजें सही रही तो बहुत सारी चीजें और बेटर होंगी क्योंकि अब बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग वापस चले गए, मास रिवर्स इमिग्रेशन भी हो गया है hmm. एंड पीपल हु थॉट दैट दे आर गेटिंग मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज वो अपने अपने कंट्रीज वापस गए. तो उनकी जगह फिल करने के लिए ना बहुत लोग आ Correct, गए. तो correct, अब correct. चीजें बेटर हो गई है नो डाउट. मैंने इतना जो बोला इसके पहले जॉब्स के बारे में या जो भी है दैट वाज माय पर्सपेक्टिव अभी तक का. अब आगे Absolutely. चीजें बेटर होंगी एंड आई एम ऑल्सो स्टेइंग हियर ऑन दैट faith and whatever I'm saying कि क्योंकि I have also invested a lot as a student. So now it's my time to repay that amount to myself and to my Correct, family. because correct, इतना correct. इन्वेस्टमेंट जो की है अब मुझे भी काम करके वो रिम्बर्स करनी है. एब्सोल्युटली. सी, यस. क्या है ना, मतलब यहाँ पे देखो, मैं इसको रूमर्स कहूँ या मेरे को इसको मैं सच्चाई कहूँ, प्रॉब्लम तो था. आई मीन, यू यस. एक्सेप्टेड. But the यस. reason why I took you, and this is one of the reasons, like we have been doing this on a consistent basis. अब आज के डेट में मैं हर हफ्ते एक स्टूडेंट को, बी इट कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहां से लाता हूँ. एंड हाँ एंड जी. एंड हियर फ्रॉम देम, बिकॉज आप फिलहाल तो आप टोरंटो में हो, कनाडा में हो. यस. आपसे यस. ज्यादा अच्छा कौन जानेगा. अभी मैं यहाँ पे यस. आई एग्री. कोई मेरे को आके बोलता नहीं यार, कनाडा की हालत बहुत खराब है, हाउसिंग क्राइसिस है, ये है वो है, मैं उससे क्यों सुनूं. तो एब्सोल्युटली. ये तो इट्स बेटर दैट और इसकी वजह से हम लोग ये पॉडकास्ट वगैरह रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. अभी मेरा भी नेक्स्ट पॉडकास्ट विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु इज इन ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ में, ओके. ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, पीआर कैसे मिल रहा है. इस वजह से हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. बारिन, अदर थिंग I randomly wanted to ask you, as in, आप आ रही हो इंडिया में? विजिट करने आई एम थिंकिंग यस ओके, ये ईयर के एंड तक आई एम प्लानिंग. बट ओके. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन आई गेट माय वर्क परमिट एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई लैंड इनटू एंड इफ दे आर गिविंग मी अ लीव और नॉट. सो बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करेंगी बिफोर प्लानिंग टू और कम. पीआर भी फाइल करना है आपको? आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो एक साल के एक्सपीरियंस के बाद आई एम एलिजिबल टू फाइल. And your 2 years of degree, that post graduation diploma, will यस. fetch you how many years of stay back in Canada? 3 years, so it's 2 plus 3. 2 plus 3. So Yes. you'll work for like year and a half, and then you apply for your PR. Yes. And then Okay. I can still stay for 2 years and then अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो मेरे पास फिर भी 3 साल का वर्क परमिट है. और अभी तो मैंने सुना है कि जिनका भी एक्सपायर हो रहा है उनको एक ब्रिज एक्सटेंशन दे रहा है. Okay. तो ब्रिज एक्सटेंशन में क्या हो रहा है कि आपका जो वर्क वीजा है जो आपका एक्सपायर हो रहा है या आपने जो भी फाइल डाली है समझो पीआर की डाली है या Hmm. वर्क की डाली है अगर वो Hmm. नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स रह गए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग हियर या दैट वाज हैपनिंग हियर. Hmm. तो उसकी वजह से जो भी तो उनको एक ऑप्शन दिए कि आप एक ब्रिज एक्सटेंशन डालो. तो इस साल अगर आप डालते हो तो आपको अगस्त 2027 तक का आपका एक्सटेंशन मिलता है. Correct. तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यू का ऐसे नहीं है ना कि हम 3 साल के बाद वापस चले जाएंगे. व्हाट Hmm. इफ हमें और रुकना है, व्हाट इफ हमारी कंपनी नीड्स अस. तो उस टाइम पे हम ये वाले ऑप्शंस भी डाल सकते हैं जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है बिकॉज इवन आई थॉट कि ओके 2 years ऑफ स्टडी 3 years ऑफ वर्क परमिट एंड व्हाट नेक्स्ट है. देन आई गॉट टू नो दैट देयर समथिंग कॉल्ड एज ब्रिज एक्सटेंशन ऑल्सो. Correct. तो आई डोंट नो अगर मेरे टाइम तक वो रहेगा या नहीं रहेगा बट आई एम होपिंग रहे
और मेरी कंपनी मुझे अच्छी मिले, कि वो मुझे चाहते हैं कि वो मुझे रखे उस टाइम तक। No, but I don't think so. You would really need a bridge extension program. The reason being, you did your PG, so on PG you will get additional points. यस। ऑन अ पीआर सिस्टम राइट, पीजी पे यस। तुमको एक यस। एडिशनल पॉइंट्स मिलेगा। यस। उसके अलावा आपको, एंड आई डोंट फाइंड एनी रीजन दैट व्हाई वोंट यू गेट द बेस्ट स्कोर इन आईएलटीएस, सो माइट एज वेल इन सेल्फ। तो वो रीजन की वजह से आई थिंक योर पीआर इज ऑन 100%। It's just that 1.5 years of experience is something which you are needing in यस। Canada. That would fetch you another like 200 points if I'm not wrong. Correct. करेक्ट। Good, fantastic. uh I think you agree with me somewhere. People may have this perception, and generally, a lot of people they go ahead with the crowd. हम आप अपने टाइम में, like when you were here around 3 years ago, तो एक ट्रेंड था कनाडा कनाडा कनाडा, तो यस। every Tom Dick Harry wants to get into Canada, right? वो भेड़ चाल में चल रहे थे करेक्ट सारे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लेकिन ये होने के बावजूद भी आई you agree with me that the people like you and most of the talented people, they have not been suffered. या। Correct. वेरी ट्रू। What I'm trying to say that अगर आपके पास talent है, irrespective of your destination, wherever you go, you can survive there and you can do much better than your एब्सोल्युटली। expectation. Is it? एब्सोल्युटली, यू जस्ट नीड टू हैव दैट कैलिबर इन यू एंड दैट इंटेंशन ऑफ स्टेइंग एंड प्रूविंग योरसेल्फ इज व्हाट आई Correct. फील। कि अगर Correct. तुम में वो है तो तुम वो करके दिखाओगे, बाय हुक और बाय क्रोक। Correct. Correct. तो वो तो Correct. चीज आई वुड 110% अग्री विथ यू ऑन दिस। Fantastic, fantastic. I'm extremely happy to see this kind of transformation in you, because as far as when I was training you for IELTS and your admission, I had an impression that you were outspoken, but या। there were a lot of things you were saying irrelevant. या। So I just thought that you are probably one of them who may be good at speaking, but not या। speaking with a logic. But now I'm extremely happy to see you here at this juncture of your life where you've been really gone to a great extent, या। and a great job. I'm extremely proud of you. I'm happy, to see your progress, and I'm really glad that your parents, who were really struggling, या। they had this dream to send you to Canada. Since we come from a middle class family, या। and everybody need to have some better lifestyle. I've seen those tears. I can't forget the tears आई in the नो, eyes आई of your नो। father. He came to me, he came to my office to meet me personally, and he told me that I'm revealing it to you now, which I've या, never आई told you नो। before. So या। he told me that Ricky sir, please don't tell this to Tanishka, and I said I like, know. नहीं I बोलूंगा मैं remember him coming to you and I also asked you कि सर कुछ बात हुई है क्या? And you were like, हम्म, हाँ हुई है, बट वही है, बस छोटी मोटी वो एडमिशन के बारे में correct, पूछ रही थी। I correct, was like, correct, okay. correct. But I'm revealing this to you today, because I think it's important for you to know the contribution which these two people have in your life. Of course, our contribution is also there. I think you should agree with this. हमारा भी कुछ contribution तुम्हारे success का बहुत होगा. contribution. You have seen me since Right, 2018. right, right, right. And I like the way you have spoken about your professors. Those Yes. names, the Debbie and whatever the name you Natalie gave it. Jensen. Correct. Fantastic. So, I would just, my final suggestion to you, or we wanted to wind it up right now, Mm-hmm. that keep grounded. Yes. Make sure that you do your best in every aspect of your target, as in PR or might as well for a job, and keep rocking. That is the only thing which I want to tell you. Thank you. Yeah. So I would, before you end this entire thing, I would actually thank you, first of all, because this was all possible. Me coming here, me doing everything. My parents' support was there, no doubt. But everything was possible all because of you. Yeah. Because I have heard stories from people कि हमारे हमने जिनके थ्रू एप्लीकेशन कराई थी उन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, ये हिडन चार्जेस थे, ये था Correct. वो था, Correct. Correct. हमसे इतने पैसे लिए, हमारा Mhm. कुछ हुआ ही नहीं। एंड आई यूज्ड टू गो एंड टेल देम कि तुम लोग मेरे वो ये कांटेक्ट लो ना, तुम इनसे क्यों नहीं बात करते? लाइक ही इज द Correct. मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई नो। Right. एंड आई एम स्टिल ऐसे कि इसके और 10,000 ब्रांचेस होने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, बिकॉज एवरी डिजर्व्स अ रिकी सर नहीं, इन वो देयर लाइफ। एक्चुअली यू वांट टू गो विश अब्रॉड। आई कुड, बट वो पॉसिबल नहीं है। क्या है ना आई कि नो, मतलब आई मैं नो। अपना, सी, आई मीन एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. यस। I do it when I'm sure that you have that credentials to be in यस। Canada. That's number one. और हम लोग मतलब ऐसा काम नहीं करते यार अभी.
one of your friends, you told me, like, he's been struggling since he been to Canada through one of the agents in Mhm. Punjab. तो पंजाब वगैरह में तो इट्स वेरी कमर्शियल. आप पैसे Yeah, very फेंको और commercial. तमाशा देखो. हम वो करते Yes. नहीं है, बिकॉज मुंबई मार्केट इज ऑलवेज बीइंग नीश मार्केट. And the advantage with you was, I feel, was your credentials and your IELTS score. So you deserve to be in Canada. It's just that you were requiring the right channel. Indeed, Yeah. there are people who there are agencies like who've been charging like a bomb, which Yeah, probably exactly. not required, but that's part and parcel. And हम blame नहीं कर सकते because वो between agency and the client होता है. तो True, उसके बारे true. में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते. But anyways, pleasure to see you after a long Thank time. you. I guess it's been probably, I guess, 6, 8 months now. Last time we had a conversation on over the Yeah, phone, a very long time, and sir. I met. remember I couldn't see you. 2019. I couldn't Yeah, see you I since remember then. 2019 was the first time 2018 was the first time when I came to you. Right. And that's when you were a little dicey about sending me or not, because even you felt that I was not confident enough. Correct. But the last thing that I would like to mention here is you have never hidden any kind of information from me, because you have always been upfront कि अगर Correct. नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. Correct. Because I've seen मेरे टाइम के जो बैच के स्टूडेंट्स थे, you have told them कि this country is not meant for you, Correct. even though you think you are trying to get into that country because your Correct. sister, your brother, or somebody of is doing well over there, तो Correct. इसके लिए तुम Correct. मत जाओ. Go to a Yes. country that is suitable for you. And Right. that is the one thing जो सबको नहीं आता. So you have done amazing counseling for me. प्रॉब्लम तनिष्का, ऐसा नहीं है ना, बंदों को समझ में नहीं आता एक्चुअली. क्या है ना कि जैसे कि मेरे फ्रेंड का हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए, बिकॉज वीजा तो हम देते नहीं है. वीजा तो वीजा ऑफिसर Yeah, के हाथ से आता है. yeah, तो वीजा ऑफिसर जब आपका प्रोफाइल देखता है, ही विल हाँ, ऑब्वियसली यू हैव यूएस विजिटर वीजा. आंख बंद करके कनाडा चले जाओ, आपको वीजा yes, मिलना ही है. बट yeah, देर आर सिनारियोज वेयर आपके स्कोर अच्छे होने के बावजूद भी रिजेक्शन आता है, बिकॉज दे ऑल्सो लुक एट योर फाइनेंशियल सिचुएशंस. Canada yeah, right now, there were a lot of rejections last year also, because they are hmm, very choosy in terms of ensuring that to whom they are granting the visa. And that is yeah, happening with most of the countries, because migration happens in the large numbers. And those countries, they know for sure that the locals will get suffer at the end of the day in their country. Therefore, correct. I mean, they can't go against having The local students, because community. I mean, having of course, and they can't go against the policy of not having students in the country, international students, because they probably have one way of generating revenue for their own country, Yes, right? exactly. But again, they need a quality people at this point in time, be it Canada, Correct, US, Australia, UK, all the countries. And correct, correct. struggle is there. I would always say that, बच्चे आते हैं अपने यहाँ पे, तो बच्चों का मैं प्रोफाइल असेस करके बोलता हूँ कि भाई तू कनाडा मत जा, भाई तू ऑस्ट्रेलिया मत Hmm, जा. तेरे को hmm. पढ़ना है, अच्छा सर मेरे को बाहर ही पढ़ना है. अरे बाहर पढ़ना है तो एक काम कर, दुबई जा. ऐसे दुबई जा. अरे दुबई सर, Yeah, दुबई क्यों? दुबई में क्या? आई मीन, पीपल डोंट नो अबाउट इट. Yesterday I had a I meet with know. Leverage, and I got to know there are so many institutions in Dubai, which are, Yeah. say, Harriet है वहाँ पे. Canadian institutions Oh, are there in Dubai. The government is giving them the okay. campuses. आप जाके दुबई में पढ़ो, masters करो, and then you apply for a golden visa. There are Okay. universities who are Okay. nominating you for the golden visa. So I That's think the nice. research is something which is lacking when it comes to the Indian students who are planning to go abroad. Uh, Yes. they just go with the mass migration. जो मेरा That's दोस्त what जा I रहे was also तो lacking when I came right, first. right, right. But the good thing Very about you true. was that you were firm on your decision, and on top of it, that you had those credentials to go to Canada. तो मेरे को वो डाउट नहीं था. It's just that I was looking for the right time, because Agreed. you pass out your 12th grade, and I still felt somewhere Yes. that जो होता है अच्छे के लिए होता है. लेकिन मैं तो कभी Hmm. भी 12th Very ग्रेड के true. बाद में ज्यादा करके बच्चों को आई डोंट रेकमेंड टू गो अब्रॉड. But yes, there are people from top-notch institutions like Bombay Mm-hmm. Scottish, अपने यहाँ पे जैसे हिरानंदानी फाउंडेशन है, Yes. या Yes. फिर आपके रायन इंटरनेशनल, पोद्दार इंटरनेशनल. Both These are. chaps are Yes. like so smart, so brilliant. They deserve to be in the US university. तो वो लोग, तो उनके लिए So तो अलग ही these are है. the people who crack. मतलब वो करेक्ट. थ्रू निकल जाते हैं, वो तुम निकल यू जाते पुट हैं. एनी सिचुएशन फ्रंट ऑफ देम वो पास कर लेंगे, करेक्ट. बिकॉज करेक्ट. उनमें वो है Right, करने का. right, right, right. Anyways, well, pleasure to have you on the show. Thank you so much Thank for your you. time and Thank patience. you. Give my regards to your mom, dad, both of them. Sure, I will. And Thank you so much. we'll again connect. Maybe once you have a job, Sure. with maybe I would six love months to. down the Yes. line and kind of experience you have, you can try to have some input in terms of the job markets in Canada. We can again Yeah. have a podcast. So thanks once again.
And Thank you. all the best. God Thank bless you you. so much. Thank you. Bye bye. See you. Bye.